Today, this is our elective course, that is Prestressed Concrete, professional elective PE. So first class. Good afternoon, everybody. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. There are 6 modules. First is the introduction, then some resistance, shear and torsional resistance and design portion. Then anchorage zone stresses, which you will understand what is anchorage zone. Then some how to design statically indeterminate structure using this Prestressed concrete. Then construction technique. Lastly, there are 2 like concrete poles or slipper, how to design them. So there are 6 modules there. First introduction of Prestressed concrete. Within that there is what are the materials. Hello, sir. Hello. Hello. Can you হ্যাঁ স্যার ধ্রুবজ্যোতি স্যার ভয়েসটা একটু ডাউন আসছে স্যার সাউন্ডটা Okay. There are 6 modules. So first is the introduction of Prestressed concrete. Now is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Second is the some analysis part, and then the construction, and last some design like concrete poles, how to design that, and sleeper. So that is the whole syllabus. So introduction, then the analysis, and then the construction, the composite construction part, and then lastly some example of how to design Prestressed concrete. So there we will be following one book, that is by Prestressed Concrete by N. Raju, and the code is 1343, IS code 1343. Okay. So in Raju, if you are coming to college, you can get it. So it is available from college. You can get the book. Okay. And code IS code, I think from the Google itself, if you write IS code 1343, you will get it. Now, the basic difference, I think you know what is reinforced concrete. So it is a kind of a passive. You are using the reinforcing bars in a passive sense. You are keeping the that bars in the concrete, and then you are just giving the weight, whatever the typical load is coming to that bar, that beam or column. That automatically what will happen, there will be, if after if it crosses some limit, then there will be cracks, right? Because concrete can't take tension. So after some time, when it is concrete has some tensile strength, but very little, right? So whenever it is crossing that limit, then there will be crack. It can't take anymore. So there the reinforcing part is you are just keeping it here. So here it is bar is using as a passive member. No? So you are just reinforcing the that concrete with that steel bar, where some portion of the load is carried by the steel bar, and after that, whenever it can't carry more than that, then there will be crack in the concrete section. But in the pre-stressed concrete, what you are using the bars, whatever the bars, you are already pre-stressing it. You are putting some stress inside the bars beforehand. Okay, even before the service load is coming, whatever that means, whenever whatever the structure you are making, when it will be in service, you are just giving the structure for the use. Before that, you are putting the that reinforcing bars inside the
concrete and you're putting that stress inside it. Okay. Meaning you're pre-stressing it beforehand before it becoming serviceable. Okay. Before use, you are keeping before use you are keeping that reinforcement bars in stress. But why? Right? So that will help what? So whenever you can see if there is a you can see this is the concrete and here it is the your tendons or the bars. Here it is tendons because you have to use you have to put stress, so you have to kind of a stretch it beforehand. So you need that stretching material, stretching bars is known as the tendons. Actually. So that what will happen whenever you stretch it, what will happen? Your whole beam will move upwards. Okay, it will move upwards. But when there will be load coming from above, it will be like this. It will be straightened up. Okay. First, it will because of the whole stressing. You are putting a stress inside the bars. It will first move up, and when there will be solidify all the stress that is coming from the pre-stressing tendon. So in this case, what will happen? There will be a very low chance that there will be any crack in the concrete. So you are using concrete compressive strength at its fullest. In the passive, you are just you are keeping the all the material, all the reinforcing bars, and you are hoping that it should not cross. You are designing such a way that it should not cross that compressive, that the tensile strength portion, so that there is no crack. But there is always a crack in the general reinforcement concrete in micro crack surface. But if you don't want any cracks in the concrete, if you want all the use of the concrete, if there is a crack, obviously that portion is getting unusable. This portion, when there is a crack, these portions are becoming unusable, meaning it is not carrying any load, right? So it is becoming kind of a most this only the reinforcing this steel bars are carrying the load, but the concrete portion which is getting cracked, that is not carrying the load. So all load is carried by the compressive part of the concrete and the steel part. All the only the cracked portion of the concrete will not take any load. So it is getting wasted. That portion of the load is getting wasted. So in that case, this stressing the bar is that is the principle. So then you can use the whole all the compressive strength, all the strength of the concrete. That is the its main power is that it can take so much compressive strength in it, right? So that power you should apply or you should utilize it. And how to utilize it? So that you beforehand you are compressing it. So whenever there is coming load from outside, it is becoming then it is so beforehand, you are making all the things, all the portion in compression. So whenever you are putting load, so then whatever maximum compression is there, that is getting nullified. Okay, that we will see later on. So, so you can say that it is basically the concrete in which internal stresses of a suitable magnitude and distribution are introduced. So beforehand concrete you are making in the concrete itself you are the stress particular how it will distribute how the magnitude will be that we will decide beforehand. It is mostly in the factory you making it, so there you can control how much magnitude of stress you want to give into that concrete
what will be the distribution throughout that section, every section, so that you will know beforehand. So you are making that in factory, that concrete. So you are introducing internal stresses beforehand. Okay. Of, outside the dead load. Okay. Without dead, because of the dead weight, whenever you are putting a beam in the in a span, it automatically there will be stress. But other than dead weight, you are introducing some internal stress of suitable magnitude, whatever the magnitude and distribution, so that the stresses resulting from external loads are counteracted to desired degree. तुम पहले से ही you are making internal stress introduce कर रहे हो, and then whenever there is an external load की वजह से जो stress आ रहा है, it can nullify, okay, counteract किया जा सकता है. Other than dead weight, you are introducing internal stress in the factory itself using that. We'll see how they are going to do that. This in the later classes. Okay. So is basically concrete in which internal stresses are. So जैसे example हो जाए जैसे wooden barrel. Wooden barrel में क्या हो रहा है? You can see the wooden barrel में these are the wood का जो steps है. तो बैरल कंस्ट्रक्शन बाय फोर्स फिटिंग ऑफ मेटल बैंड्स. उसके अंदर क्या होता है, हमारा काठ का ये सब टुकड़ा दिया हुआ है, उसको एक मेटल बैंड से उसको ये किया जाता है ना पेरीफेरी में. इंडिकेट दैट द आर्ट ऑफ प्रिस्ट्रेसिंग. तो क्या हो रहा है, तुम जब भी इसके बाहर से मेटल बैंड दे रहे हो ये जो वुडन बैरल के अंदर पास में, तो जब भी पानी आ रहा है इसके अंदर, पानी का लिक्विड जो भी डाल रहे हो, वो क्या करेगा, इसके पहले से ही तुम उसको बाहर से उसको मतलब स्ट्रेस दे के रखा, तो वो सब अब क्या होगा, अपना अपना जगह में रहेगा. जब भी उसके अंदर पानी दे रहे हो, उसके वजह से जो स्ट्रेस क्रिएट होगा बाहर की तरफ, दैट विल बी काउंटर एक्टेड, राइट, बिकॉज तुम्हारा मेटल जो बैंड है, दैट यू बिफोर हैंड यू क्रिएट द स्ट्रेस. जब भी बाहर से भी जितना भी मतलब वाटर आ रहा है, वो उसको काउंटर एक्ट कर पाएगा. ठीक, तो पहले से ही तुम जो वुडन स्टेप्स को पहले से बाहर के बैंड से जुड़ा हुआ है. ठीक है, तो पहले से ही तुम उसके अंदर एक कॉम्प्रेसिव प्रीस्ट्रेस, जब भी तुम रेडियल बैंड से जोड़ रहे हो सब स्टेप्स को, क्या होगा, उसके अंदर ऑलरेडी जो आसपास में एक कॉम्प्रेशन में रहेगा. और दिस इज द कॉम्प्रेसिव प्रीस्ट्रेस, बिकॉज तुम उसको अभी तक यूज नहीं किए हो. जब भी तुम उसके अंदर पानी की वजह से जो भी लिक्विड उसके अंदर डाल रहे हो, जो भी सामान डाल रहे हो, उसकी वजह से जब भी रेडियल प्रेशर जब भी आ रहा है, that will be counteracted because तुम पहले से जो compressive pre-stress देते हो metal band के लिए. So this is kind of a art of pre-stressing has been practiced without कि उसका exact reason बा उतना analysis या फिर research नहीं हुआ, मगर basic idea that is how to तुम pre-stress पहले से create कर रहे हो, so you are introducing the stress pre, so that is the pre-stress. Okay. Pre meaning beforehand, before you are using, before you use introducing the stress. So that is the pre-stress. You are introducing stress pre before it is becoming serviceable, because before that you are introducing the stress. So that's why it is the pre-stress. Okay. तो क्या बोल रहे हैं, the tensile strength जो नहीं बोल रहा है, the tensile strength of plain concrete is only a fraction of its compressive strength. जो concrete का basic उसका जो tensile strength is very low, so it is only a fraction of the compressive strength. Right? And the problem of it being deficient in tensile strength appears to have been deriving factor in development of the composite जो reinforced concrete का जो idea है, because जब भी उसके अंदर sagging, जब भी मतलब नेगेटिव मोमेंट्स आ रहे हैं, तो वो जो टेंशियल फोर्सेस आ रहे हैं उसको काउंटरैक्ट करने के लिए यू आर इंट्रोड्यूसिंग सम काइंड विद स्टील बार, that is you are reinforcing the concrete so that it can take at least some portion of the tensile strength
Okay, so that is the reinforcement concrete idea. And the development of early cracks in reinforced concrete due to incompatibility in the strength, क्योंकि दोनों का incompatibility है, क्योंकि जो जो स्टील है it will not crack in a particular, और इसका जो strain है बस इलास्टिसिटी है बहुत, टेंसाइल इलास्टिसिटी है बहुत ज्यादा है, अदर देन तुम्हारा कंक्रीट का जो टेंसाइल इलास्टिसिटी कम है, तो ऑब्वियसली तुम्हारा दोनों का जो स्ट्रेन है दैट इज डिफरेंट स्ट्रेन बिहेवियर, एंड इसके वजह से क्या हो रहा है, देयर विल बी क्रैक्स. So the early cracks in reinforced concrete due to incompatibility in the strengths of steel and concrete, क्योंकि दोनों दोनों तरह से अपने हिसाब से स्ट्रेन क्रिएट करे, बिकॉज दोनों का इलास्टिसिटी जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी डिफरेंट है, तो देयर विल बी ऑब्वियसली इनकॉम्पिटिबल है, इसलिए देयर विल बी क्रैक. Was perhaps the starting point in the development of a new material like प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट. जो अभी बोल रहे थे, जो क्रैक होने का, क्रैक जब भी हो जा रहा है, बिकमिंग वो पोर्शन, तुम जब भी इवन व्हेन यू आर ड्राइंग इन द, जब भी कंक्रीट डिजाइन में ड्राइंग कर रहे हो, तो देखना कि ऊपर का पोर्शन में सिर्फ जो कंप्रेशन के लिए जो ड्राइंग किया जाता है वो लिया जाता है, और नीचे सिर्फ ओनली तुम्हारा जो कैलकुलेट जब ड्राइंग करते हो तो उसमें सिर्फ ये लिया जाता है कि तुम्हारा स्टील बार के अंदर कितना टेंशन स्ट्रेंथ है. तो कंक्रीट ऑलरेडी नीचे का जो पोर्शन है, न्यूट्रल एक्सिस का नीचे का जो पोर्शन है, उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ कैरीड बाय कंक्रीट को लिया नहीं जाता, उसको जीरो पकड़ा जाता है, ओनली स्टील में भी पकड़ा जाता है. तो ऑटोमेटिकली वो जो पोर्शन का जो कंक्रीट है नीचे का, you are already providing it, right? So you want that it should be utilized, but in actual analysis you are not also using it, and you are hoping that some portion, obviously it has no tensile strength is not zero, of concrete का tensile strength zero तो है नहीं, कुछ portion तो obviously it can carry, but for the sake of safety के लिए you are taking the tensile strength of concrete as zero जब भी तुम एनालिसिस करने जाओ. तो ऑब्वियसली दैट पोर्शन जो हाफ न्यूट्रल एक्सिस के नीचे का जो कंक्रीट पोर्शन है, उसका स्ट्रेंथ का तुम कंसीडर ही नहीं कर रहे हो डिजाइन में, so that is getting wasted. So rather, if you can use the full concrete का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक जो मेन स्ट्रेंथ है उसको यूज कैसे किया जाता है, तो दैट दे आर सेइंग दैट इज द वन रीजन जो प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट का आइडिया है. So the application of a permanent compressive stress to a material like concrete, which is strong in compression but weak in tension, increases the apparent tensile strength of that material. क्योंकि उसका compression को हम of the material, because the subsequent application of tensile stress must first nullify the compressive stress. तो परमानेंट अगर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस ऑलरेडी तुम कंक्रीट में दे के रखते हो पहले से फर्स्ट, तो कंक्रीट ऑलरेडी तुम जब मतलब उसको मतलब ये कर रहे हो, डाल रहे हो उसके अंदर, तभी से ही पहले से ही तुम उसको कॉम्प्रेशन में रख दो, ठीक है, पहले से ही ये जो कंक्रीट का ब्लॉक है, तुम पहले से ही उसको कॉम्प्रेशन में रख दो. नीचे या फिर ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम्हारा कैसे तुम डिस्ट्रीब्यूशन चाहते हो. तो पहले से ही तुम्हारा जो कंक्रीट जो ब्लॉक है उसको टेंशन ऐसे करके कंप्रेशन करेगा. तो इसका अंदर जो भी अभी तुम अगर उसका ये देखोगे, you see ये हर सेक्शन में कंप्रेशन हो रहा है, इसका जो स्ट्रेस होगा हर जोन में होगा. तो अभी इस मटेरियल को जो तुम्हारा कंक्रीट हो गया, पुट इट इन द स्ट्रक्चर में पहले से अभी डाल दिया, तुम उसको डाल दिया तो क्या होगा, ये ऑलरेडी कंप्रेशन में है ना, अभी जो भी लोड आएगा इसके ऊपर तो क्या होगा ऑटोमेटिकली, इसका ऊपर तो कंप्रेशन ही रहता है जब भी ये होता है ना, तो नीचे जब भी ये टेंशन आने का चालू होगा
तो क्या होगा, ऑलरेडी जो कंप्रेशन तुम इंट्रोड्यूस किया हो, जो स्ट्रेस इंट्रोड्यूस किया हुआ है, सोचो इसमें कंप्रेशन स्ट्रेस नीचे तुम अगर कैलकुलेट करोगे, लिखा कि इट इज कमिंग एज 80 MPa। हाँ, तो अभी जब भी तुम ऊपर से लोड दे रहे हो, उसके वजह से जो लोड आ रहा है, लेट्स से इट इज 60 MPa, उसके वजह से जो, सो इट इज ऑलरेडी इन 80 MPa कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस का, उसमें से 60 MPa जो तुम्हारा टेंसाइल स्ट्रेंथ है, so it will counteract it, so it will be on, उसके अंदर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस रहेगा कि तुम पहले से 80 MPa मतलब उसको स्ट्रेस दे के रखो, मतलब कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। और ये लोड की वजह से नीचे कितना आ रहा है, टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा है, सोचो 60 MPa, तो 20 MPa तुम्हारा, तो पहले से तुम्हारा ये बिकमिंग 20 MPa कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, तो नीचे का पोर्शन पूरा ही कॉम्प्रेशन में रहेगा। तो जब भी वो कॉम्प्रेशन में रहा कोई मतलब कंक्रीट हो, तो ऑब्वियसली इट विल नॉट क्रैक। तो तुम तो कैलकुलेट कर सकते हो कि इसके ऊपर ऐसा लोड आया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, या फिर दूसरा कोई भी लोड है, तो तुम पहले से ही कैलकुलेट किया जा सकते है उसमें टेंसियल स्ट्रेस कितना आएगा नीचे, वो हो सकता है 60 हो या फिर 120 MPa हो, जो भी है व्हाटएवर इट इज। तो तुम अगर वो पहले से ही इंट्रोड्यूस कर दो लोड को, सोचो तुम इंट्रोड्यूस कर दिए 120 MPa कंप्रेशन पहले से ही, तो क्या होगा, 120 आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। और 120 तुम पहले से कंप्रेशन दे के रखो, अरे दिस इज माइनस, तो दोनों मिला के अल्टीमेटली नीचे का पोर्शन में तब टोटल रिजल्टेंट स्ट्रेस कितना हो जाएगा, पहले से कुछ कंप्रेशन दिया हुआ है 120 MPa, और इस लोड की वजह से लोड आ रहा है 120 MPa, दैट इज टेंशन। सो दोनों नलिफाई होके क्या हो जाएगा, नीचे जीरो हो जाएगा। सो ऑटोमेटिकली दैट पोर्शन विल बी स्ट्रेटन, मतलब उसमें ना कंप्रेशन हो रहा है ना टेंसल जो हो रहा है, न्यूट्रल हो गया, तो उसमें वो पोर्शन तुम्हारा जीरो हो गया। तो तुम्हारा होल जो भी पोर्शन है कंक्रीट का, पूरा पोर्शन होल थिंग विल बी इन कंप्रेशन ऑनली, नीचे जीरो ऊपर थोड़ा थोड़ा बढ़ के, मगर टोटल जो कंक्रीट है उसमें हर जगह में सब जो भी मटेरियल के अंदर तुम अगर वो उसको काटोगे, तो हर पॉइंट तुम अगर देखोगे कि हर चीज अपने आप दोनों कंप्रेशन में, ठीक है। तो कहीं पे भी टेंशन नहीं, पूरा फुल जो कंक्रीट ब्लॉक में मतलब कंप्रेशन नहीं, और कंप्रेशन हुआ तो ऑब्वियसली जैसे ये कंक्रीट है, तो कंक्रीट तो कंप्रेशन बहुत आराम से ले सकते हैं, तो उसका स्ट्रेंथ ही ऐसा है। तो दैट, so that is the idea, कि पहले से you are introducing some kind of stress, so like you are already using some permanent compressive stress, क्योंकि तुम पहले से जो बोला कि 120 MPa दे के रखा, तो इट इज परमानेंट थ्रू आउट द, मतलब उसका जो ये रहेगा, जितना दिन उसका डिजाइन लाइफ है, उतना दिन तक वो compressive stress तुम दे के रखते हो। So this is a permanent compressive stress to a material like concrete, तुम अगर दे सको, which is strong in compression but weak in tension, increases the उसका apparent tensile strength of the material, तो उसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ हो वो बढ़ जाएगा, क्योंकि तुम पहले से उसमें कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस देख रहे हो, तो उसमें और भी जब भी लोड डालोगे, तो उसमें जब भी टेंसाइल स्ट्रेंथ टेंसाइल स्ट्रेसेस आएगा, दैट इट कैन कैरी इट, तो उसका जो स्ट्रेंथ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ लेने का कैपेसिटी वो बढ़ गया। Okay. So, because the subsequent application of tensile stress must first nullify the compressive pre-stress. तो पहले से जो तुम compressive pre-stress देखे, जैसे मैंने बोला 120 MPa पहले से तुम देख रहे हो, so that will be compressive pre-stress, जो पहले से जो 120 MPa जो भी सॉरी फोर्स जो दे रहे हो, जिसकी वजह से इसमें स्ट्रेस आ रहा है, तो वन, so जो that is 120 MPa तुम जो pre-stress वो पहले से देख रहे थे, तो इट विल नलिफाई जो टेंसाइल स्ट्रेंथ, लेट्स से इट इज 80 MPa या फिर 120 MPa, जो भी तुम पहले से एनालिसिस में जो कैलकुलेशन करके रखोगे, दैट विल ऑटोमेटिकली नलिफाई द टेंसाइल स्ट्रेस। तो उसका जो एक्चुअल स्ट्रेंथ होगा टेंसाइल के अगेंस्ट, इट विल बी मच मोर। So in 1904, Freycinet attempted to introduce a permanently acting forces in concrete to resist the elastic force developed under load. This idea was later pushed. So Freycinet is the person who first introduced the idea of pre-stressing
एंड जो अभी भी चल रहा है उसके बाद देयर आर मेनी researches and has been done because of its effectiveness, क्योंकि ये बहुत इफेक्टिव है, तो इसके इफेक्टिवनेस के लिए ये धीरे धीरे popularity gain किया and then it's becoming quite a norm, especially specifically the bridges of bridges bands में यूज होता है। अभी तो सब जगह में ऑलमोस्ट यूज होता है, बीच में तो होता ही है। And the significant observation which resulted from pioneering research कि concrete के एक है you need high strength steel or concrete, and और एक है you have to recognize the losses of pre-stress ड्यू टू वेरियस कॉज के लिए। ठीक है, तो दो सिग्निफिकेंट फैक्टर्स मिला जब भी वो लोग रिसर्च किए। देन एक है कि तुमको हाई स्ट्रेंथ स्टील एंड कंक्रीट चाहिए, सेकेंड है तुमको जो लॉसेस है वो फर्स्ट से कैलकुलेशन करना है। तो तुम जो सोचे कि 120 एमपीए तुम इंट्रोड्यूस करोगे, बट जब भी तुम एक्चुअल केस रियल लाइफ में कर रहे हो तो उसमें 120 एमपीए सोच के किया, बट जब तुम फैक्ट्री में उसको बना रहे हो तो उसके डिफरेंट रीजन की वजह से उसका जो स्ट्रेस है, प्री स्ट्रेस तुम 120 सोचा था वो सोचो इंटू मतलब अल्टीमेटली कुछ लॉस हो गए, एक्चुअल में वैल्यू आया 80 एमपीए से, तो 40 एमपीए मतलब किसी कारण से लॉस हो गया। तो क्या कारण से तो बाद में देखेंगे। तो जो रीजन के वजह से तुम्हारा, तो उसका रिकग्नाइज करना क्या क्या लॉस हो सकते हैं प्री स्ट्रेस में, जो सोच के, क्योंकि तुम जब स्ट्रक्चर बन गया उसके बाद तुम जब उसको इंस्टॉल कर रहे हो उसमें अगर लॉसेस को तुम कैलकुलेट नहीं किया तो ऑब्वियसली तो ऑटोमेटिकली जो तुम्हारा रेनफोर्समेंट कंक्रीट में होता है कि कुछ नीचे फिर से क्रैक आ जाएगा। और जब भी क्रैक आ रहा है तभी सोच लेना कि वो पोर्शन का कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ है मतलब वो और काम में नहीं आ रहा है ना, तो दैट इज नॉट द, तो प्रिस्ट्रेसिंग का मतलब ही नहीं रहा। So the early attempts to use mild steel in the pre-stressed concrete were not successful, as a working stress of 120 MPa in mild steel is more or less completely lost due to elastic deformation creep। जो losses है जैसे elastic deformation की वजह से या फिर creep की वजह से या फिर सिंकेज की कंक्रीट के सिंकेज की वजह से कुछ पोर्शन का जो अभी बोला कि प्री स्ट्रेस में लॉस हो गया। और माइल्ड स्टील का ऐसे भी जो वर्किंग स्ट्रेस बहुत कम है, तो ऑलमोस्ट बोल रहे ज्यादातर ये पूरा जो जिस कारण से दिए थे वही लॉस्ट हो गया माइल्ड स्टील का। तो द नॉर्मल लॉस ऑफ स्ट्रेस इन स्टील इज जनरली 100 to 250 240, और जहाँ पे माइल्ड स्टील का स्ट्रेस ही है 120 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, जहाँ पे और लॉस जो हो जा रहा है वो ऑलमोस्ट 100 to 40 जैसा। तो वो काम पे तो है नहीं, कुछ उसका काम नहीं रहा। So it is apparent that this loss of stress is to be a small portion of the initial stress, and the stress in steel in initial stages must be very high, about 1200 to 2000 MPa। तो तुमको एक्चुअली जितना मतलब जो एक्चुअल स्ट्रेंथ जो प्री स्ट्रेस कॉम्प्रेसिव प्री स्ट्रेस के लिए तुमको ऑलमोस्ट 200 इतना प्री स्ट्रेस होना चाहिए कंक्रीट के अंदर वो लोग। अगर बट अगर 100 to 40 के आसपास स्टील लॉस हो गया, जहाँ पे माइल्ड स्टील का तो 120 एमपीए का आसपास उसका स्ट्रेस कैपेसिटी है, तो ऑब्वियसली यू नीड सम हाई स्ट्रेंथ स्टील। Same way, high strength concrete is necessary as the material offers high resistance and tension, shear, bond, bearing, क्योंकि तुम उसमें जब भी तुम बाहर से कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस डाल रहे हो तो कंक्रीट भी बहुत स्ट्रेंथ होना चाहिए, उसको ऑलरेडी कैन टेक सम टेंशन, शेयर, बॉन्ड, बियरिंग, क्योंकि तुम एंकरिंग डिफरेंट मतलब चीज उसके अंदर इंट्रोड्यूस होगा, तो उसमें जो जनरल स्ट्रेंथ कंक्रीट होगा दैट विल बी मतलब उसमें क्रैक आ जाने के चांसेस है, जब भी तुम फैक्ट्री में भी बना रहे हो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। तो इन द जोन ऑफ एंकरेज जो जिस जोन में, ये तो ठीक है कंक्रीट का ब्लॉक ले लिया साइड से, मैं बोला कि तुम इस जोन में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंप्रेसिव फोर्स डाल के रखो, मगर कैसे डालोगे तो दैट वो दैट विल बी
ये जो reinforcing टेंजेंस है, क्योंकि वो छोटा छोटा मतलब स्टील का जो स्ट्रिप रहता है, बार नहीं एग्जैक्टली, तो रेनफोर्सिंग जो टेंडेंस है स्टील का, उसको एक एंकरिंग, एंकर बोलते हैं उसको, दिखाएंगे फोटो बाद में। एंकर के जरिए उसको उसमें अटैच किया जाता है, ये जो पार्ट्स है ना, दिस पोर्शन, ये जो इसको बोला जा रहा है जहाँ पे एंकर लगा हुआ है, दैट इज योर एंकरेज जोन। हाँ, तो जब भी तुम एंकर बाहर से कुछ चीज लगा रहे हो उसके ऊपर, उसको स्ट्रेस फोर्स दे रहे हो, ऑब्वियसली क्या हो जाएगा तब, वो ऐसे तो जोन यहाँ इसका तरफ दूर से पड़ा अच्छे से, दूर से नहीं दिखाई दे रहा कोई। तो ऑब्वियसली इस जोन में स्ट्रेस आने का बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब बहुत चांसेस है इस, ये जो इसको बोला जाता है एंकरेज जोन स्ट्रेस, जोन स्ट्रेस। तो एंकरेज जोन में जो स्ट्रेस आ रहा है उसको कम करने के लिए, वो लोड लेने के लिए भी तुमको हाई स्ट्रेंथ मतलब कंक्रीट चाहिए, क्योंकि वो जनरल जो स्ट्रेंथ कंक्रीट है वो ले नहीं पाएगा ऑलरेडी। जब भी स्ट्रेस डाल रहे हो इनिशियल स्टेज में वो क्रैक हो जाता है। इसकी वजह से, so in the zone of anchorage, the bearing stresses being higher, high strength concrete is invariably preferred to minimize cost। ये तो फिर से तुम्हारा जो, जिस कारण से तुम उसको डाल रहे हो, तो कंक्रीट का ही वो एंकरेज जोन में अगर क्रैक हो गया या कुछ लॉस हो गया तो तुम्हारा फायदा नहीं हुआ, तो इट इज ऑटोमेटिकली कॉस्ट को बढ़ा रहे हैं। So high strength concrete is less liable to shrinkage cracks and has a higher modulus of elasticity and smaller ultimate creep strength, resulting in a smaller loss of pre-stress and strength। तो high strength का बहुत वजह से shrinkage crack कम होगा, उसका strain creep कम होता है, modulus of elasticity भी ज़्यादा है। तो ultimately if you see in a long term, कि तुम्हारा जो प्री स्ट्रेस तुम चाहते हो कि उसमें लॉस कम हो, तो लॉस भी कम हो रहा है। हाई स्ट्रेंथ जो कंक्रीट है वो भी ज्यादा, मतलब उसका स्ट्रेंथ भी ज्यादा है, और उसका हाई स्ट्रेंथ ले रहे हो, इसलिए क्या हो रहा है उसका क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन कम हो जाएगा, है ना। जितना लोड हो, ज्यादा लोड अगर बहुत कम, हाई स्ट्रेंथ मतलब क्या है, स्मॉल पोर्शन का चीज भी बहुत ज्यादा लोड ले सकते है। तो अगर ऐसा ही केस है तो तुम्हारा जो क्रॉस सेक्शन होगा वो छोटा, वो कम हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन कम हो गया तुम्हारा, तो तुम्हारा डेड वेट जो है, क्योंकि तुम्हारा जो टोटल सेक्शन, टोटल जो बीम है उसका साइज भी छोटा हो गया, साइज अगर छोटा हो गया तो उसका वेट भी कम हो जाएगा। तो reduce the dead weight of the material and longer spans become technically economically practicable। मतलब तो अगर छोटा हो गया तो इजीली उसको लेके जा सकते हैं, और है ना, स्ट्रेंथ ऑलरेडी बहुत स्ट्रेंथ ले रहे हैं, तो अगर लॉन्गर स्पैन है उसमें भी बहुत यूजफुल है। तो एज ए होल इसमें बहुत सारा बेनिफिट्स है, मतलब हाई स्ट्रेंथ लेने के, ठीक है। तो तीन, तो आज फर्स्ट क्लास में हम लोग इतना ही देखते कि जनरली व्हाट इज प्रीस्ट्रेस कंक्रीट, और भी डिटेल्स में जाएंगे, कौन इंट्रोड्यूस किया था उसको, बेसिक आइडिया रेनफोर्स कंक्रीट और प्रीस्ट्रेस कंक्रीट का बेसिक क्या डिफरेंसेस है, और भी डिटेल में हम लोग धीरे धीरे क्लास नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है। तो अप टू दिस किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। हाँ सर।